Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello students, good morning. Today we will discuss the exponents for class 8. First one, exponential form. When any number or variable written in the power notation that's form of a number or variable is called its exponential form as x raised to the power n. Here x is a base and n is a power, which is also known as exponent. Okay, so this whole form is x raised to the power n is called their exponential form. Exponential form. Okay, suppose that any number written 3 raised to the power 5. Here 5 is a power or exponent and 3 is a base. And this whole 3 raised to the power 5 is called exponential form. Okay. Now first is law of exponents. Exponents के laws. First one, x raised to the power m multiplied by x raised to the power n. Here we see that if any two exponential form are given in the multiplication notation. जब भी कभी दो exponential को multiply करते हैं, condition is that कि their base is equal. अगर उनके base equal हैं, तो then their power will add. As x raised to the power m multiplied by x raised to the power n can be written as x raised to the power m plus n. जैसे 3 raised to the power 5 and 3 raised to the power 4. Here we see that both the base are equal, then their power will add, and here 4 plus 5, 9. 3 raised to the power 9. Similar second one, x raised to the power m divided by x raised to the power n. Whenever both the exponential form having same base and we need to find out their division, on the time of division their power will subtract. As 3 raised to the power 5, 5 raised to the power 5 divided by 5 raised to the power 2. Here we see that both the exponential form having same base, then their power will subtract. 5 minus 2 becomes 3. Okay. Similar third one, x raised to the power m raised to the power n. अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर फाइंड आउट करनी हो तो ऑन दैट टाइम देयर पावर विल मल्टीप्लाइड बाय देमसेल्फ, तो उनकी पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3. 5 रेज टू द पावर 2 is an exponential form and here we have a power 3. So 3 2 is 6. It becomes 5 raised to the power 6. Similar fourth one, x raised to the power m is equals to x1 upon x raised to the power minus m. अगर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसको न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में चेंज करना हो तो ऑन दैट टाइम द साइन ऑफ देयर पावर विल चेंज. जैसे 3 रेज टू द पावर 5, अगर ये न्यूमेरेटर में है और इसको डिनोमिनेटर में चेंज करना है तो वी विल राइट 3 रेज टू द पावर माइनस 5, यानी द साइन ऑफ देयर पावर विल चेंज. 5 था माइनस 5 हो गया. और अगर कोई वैल्यू ऐसे गिवन है x रेज टू द पावर 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x रेज टू द पावर माइनस 4. मीन्स व्हेन वी ट्रांसफर एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्रॉम न्यूमेरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमेरेटर, द साइन ऑफ देयर पावर विल चेंज. ओके. सिमिलर x रेज टू द पावर m इंटू y रेज टू द पावर m. यहां पर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और हमको उनका मल्टीप्लाई फाइंड करना है. डिफरेंस इज दैट बोथ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैविंग डिफरेंट बेस. इनके बेस डिफरेंट है बट देयर पावर्स आर सिमिलर. सो वी विल राइट देम x y रेज टू द पावर m. जैसे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3. यहां पर 2 रेज टू द पावर 3 एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 5 रेज टू द पावर 3 एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. दोनों के बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. सो इनके बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट बिकम्स 5 2 जा 10 रेज टू द पावर 3. ओके. सिमिलर इन डिवीजन केसेस x रेज टू द पावर m अपॉन y रेज टू द पावर m मीन्स x अपॉन y रेज टू द पावर m. एज 2 raised to the power 3 upon 5 raised to the power 3 can be written as 2 upon 5 raised to the power
3. Similar, okay. The last one, x raised to the power 0 is equals to 1. अगर किसी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है. ओके, थैंक यू. Hello students, good morning. Today we will discuss the remaining parts of exponent. First one, as x raised to the power n. The value of x raised to the power n is depend upon the value of n. If any cases n is equals to 0, then x raised to the power 0 is equals to 1. As I have already told you, in any cases the power of any number or variable is 0, the value becomes 1. Similar, minus 1 raised to the power n means that if we have minus 1 as any power, so this value is depend upon the power as even or odd. If power is an even number, then the value become positive, as minus 1 raised to the power 6 means that plus 1. 6 is an even number. In place of 6, either this is 2, 4, 8, 10, 20, 22, 25, 24 or 100. Any of the number is an even, then the value become positive. Okay, similar, if n is an odd number, then the value becomes negative, as 5. Minus 1 raised to the power 5 is equals to minus 1. Okay. सो माइनस 1 की वैल्यू उसकी पावर पर डिपेंड करती है कि वो इवन है या ऑड है. अगर माइनस 1 की पावर इवन है तो सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव आता है, और माइनस 1 की पावर अगर ऑड है तो सोल्यूशन हमेशा निगेटिव आता है. सिमिलर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एज 7 1 2 0 00 and 000 is given. Standard form means if we write any number in 10 raised to the power form, then the number is said to be its standard form. As we can write this 7.1 into 10 raised to the power 8. If we count the number of digits from the right hand side, we find that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we can write as 7.1 into 10 raised to the power 8. We will place the decimal up to one place. Similar, as 0.000072. Here we see that we transfer the decimal from right to left hand side, and here we have the decimal to shift from left to right as 1, 2, 3, 4, 5 and 6 digit. So we will write 7.2 into 10 raised to the power minus 6. अगर हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव, और अगर डेसिमल को लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो 10 की पावर निगेटिव. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट्स विद देयर लीनियर इक्वेशन. अगर कोई भी एक्सपोनेंट्स वैल्यू गिवन है और लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में, और हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ऑन दैट टाइम एज वी हैव एग्जांपल minus 3 raised to the power 2m plus 1 multiplied by minus 3 raised to the power 3 is equals to minus 3 raised to the power 12. जब इसको सॉल्व करते हैं तो we see that in the left hand side here both the base are equal, then their power will add 2m 1 plus 3 4. So 3 minus 3 raised to the power 2m plus 4 is equals to minus 3 raised to the power 12. In this case both the sides having same base, so their power will be equal, as 2m plus 4 is equals to 12. 4 will transfer to the right hand side, we get 8 divided by 2 is equals to 4. So the value of m is 4. Clear? By this way we can solve any linear equation in exponential form. You can collect the solution sheet from the school app. Okay, thank you.